In this video, I am going to teach you sentence correction. So the first rule is a verb agrees with its subject in number and person. It means if a subject is singular, then the verb will be singular, and if the subject is plural, then the verb will be plural. For example, in the first two sentences, the verb is used here in a wrong way. So in correct sentences, I have corrected the verb. For example, in the first sentence, it is written here, he go to college daily, and it is incorrect. The correct sentence is he goes to college daily, because verb should agree with the subject, and subject here is singular. In the third sentence, the boys, it is a plural subject, so the verb will be plural. The boys has taken the rest is incorrect, and the correct sentence is the boys have taken the rest. Our second rule is two or more singular subjects join by and take a plural verb. It means if I have written here one subject a boy and second subject a girl, so it means these are two singular subjects and they are joined by and is a conjunction, and if they are joined by and, then the verb will be plural, but here is singular verb, so it would be incorrect. We will write a boy and a girl are reading. Similarly, in the second sentence, he and his friend has arrived. So these are two singular subjects and these are also joined by conjunction and, so the verb will be plural and not singular. So has is incorrect verb and the correct form of verb is have. He and his friend have arrived. Our third and most important rule is the following words take a singular verb if they are used as subjects. मतलब अगर हमारे पास इन सारे words में से each, every, neither, either, नन, मैनी, ए, इन सारे वर्ड्स में से हमारे पास कोई भी वर्ड अगर सब्जेक्ट पे आ जाए तो हमारी जो वर्ब होगी वो हमेशा जो है वो कैसे यूज़ होगी, हम हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस रूल में लिखा गया है. हम इसको सेंटेंसेस के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है डैट इज़ ईच वन ऑफ दैम वर गिल्टी. सो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर सेंटेंस हमारे पास सब्जेक्ट में ईच आ जाए, नन आ जाए, एवरी आ जाए, तो हमारे पास जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, बट हियर वर्ब वर इज़ अ प्लूरल वर्ब, सो इट इज़ इनकरेक्ट. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ईच वन ऑफ देम वॉज गिल्टी. तो आप लोगों को स्टूडेंट्स बस एक चीज़ याद करनी है, एक चीज़ जो है वो आप लोगों को माइंड में रखनी है बिफोर डूइंग दीज सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस, कि हमारे पास जब भी इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमारे पास जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी ना कि प्लूरल होगी. सो द करेक्ट सेंटेंस इज ईच वन ऑफ देम वॉज गिल्टी. सिमिलरली नन ऑफ देम आर इनोसेंट. सो नन हमारे पास फिर से वो सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है और एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा जो है वो वर्ब सिंगुलर आती है. सो नन ऑफ देम इज इनोसेंट. एंड द लास्ट सेंटेंस इज एवरी वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द बुक. एवरी वन ऑफ द boys has stolen the book. क्यों? क्योंकि हमने जो है वो इसी रूल को जो है वो फॉलो करना है in which these words use singular verb. So has is singular verb. So these were three most important rules regarding verb and noun. So students, you must know these rules just to avoid errors in doing sentences.